Okay, so when we talk about the forms in React, okay, so for creating the forms in the React, there are two ways to create an interactive form. Okay, one is uncontrolled, one is uncontrolled component or form. Another is controlled component or form. Okay, now after this, let us talk about, okay, what is controlled form and uncontrolled. So firstly, we will see what is uncontrolled. So uncontrolled means what? Uncontrolled form. Okay. So the input element, you can say, React is React never participates. React never participate in handling or maintaining any state for the input elements on the form. Okay. Any changes in the values of input elements, or you can say of the form, is handled by HTML DOM itself. By HTML DOM itself. For implementing this or for achieving this, you can say, okay, the reference variables are used. Variables are used to create the reference variables for each and every element, input element. The hook is used, useref hook is used. Useref hook is used. Okay. एंड देन कंट्रोल्ड फॉर्म के बारे में हम बाद में इसमें टाइप करके लिख देंगे. सो कंट्रोल्ड फॉर्म इन विच, ओके, और अदर यहीं पे लिख देते हैं, रिएक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टेट maintaining the state of the input elements maintaining the state of the input elements on the form. Okay, to achieve this the state variables, okay, are used. React has complete control over the form and the changes in the values of form. Okay, so these are the two ways of creating the form. First is the controlled component, uncontrolled, and second is the controlled component. So uncontrolled में React का कोई participation है क्या? For any kind of state maintenance? No. जो भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, इनपुट एलिमेंट्स में यूजर जो भी वैल्यूज देगा, अलग अलग वैल्यूज देगा, वैल्यू को चेंज करेगा. ऑल दिस इज हैंडल्ड बाय HTML DOM itself. Is the
React going to participate into those activities? No, React का उसमें कोई भी रोल नहीं है, and that is the reason it is called as a uncontrolled form. क्योंकि React is not participating in that, right? React का उसमें कोई लेना देना नहीं है. It is wholly or completely maintained by HTML DOM. और ऐसा करने के लिए हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएटेड होता है, जिसके थ्रू वो स्टेट HTML डॉम जो है वो स्टेट मेंटेन करेगा या चेंजेस को मेंटेन करेगा. ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म में है. बट नाउ यू टेल मी कि अगर रिएक्ट के बिजनेस लॉजिक में मुझे वो स्टेट चेंजेस चाहिए, आई वांट टू सी द स्टेट चेंजेस इन द रिएक्ट बिजनेस लॉजिक, तो कैन दिस अनकंट्रोल्ड फॉर्म हेल्प मी? कि रिएक्ट में समझो मुझे कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है एंड उसमें आई वांट दो स्टेट चेंजेस इन द इनपुट एलिमेंट्स. कैन द अनकंट्रोल्ड फॉर्म हेल्प मी? यस, इट कैन नॉट हेल्प बिकॉज रिएक्ट का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना. जो भी हो रहा है वो HTML डॉम लेवल पे हो रहा है. रिएक्ट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ स्टेट चेंजेस, राइट? तो अगर रिएक्ट में हमें कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है वेयर आई वांट टू यूज दोस चेंज्ड वैल्यूज या अपडेटेड वैल्यूज, तो ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड फॉर्म विल नेवर हेल्प मी. अनकंट्रोल्ड फॉर्म आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? जहां पे आपको कोई स्टेट मेंटेनेंस नहीं करना है, कोई बिजनेस लॉजिक में वो स्टेट चेंजेस इन्वॉल्व नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कैलकुलेटर, समझो ऑनलाइन कैलकुलेटर है तो यूजर कुछ वैल्यूज देगा, यूजर इज गोइंग टू प्रोवाइड सम वैल्यूज और आप कुछ कैलकुलेशन देखना चाहते हो, बट यू डोंट वांट टू मेंटेन द वैल्यूज दैट हैज गिवन बाय द यूजर. मतलब एप्लीकेशन साइड में यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग दोज वैल्यूज, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग दोज चेंजेस. so obviously in such scenario we will go for uncontrolled form. but अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो जिसमें यू हैव टू मेंटेन द स्टेट चेंजेस, यू हैव टू मेंटेन द स्टेट चेंजेस, कि अगर कोई भी चेंज होता है तो रिएक्ट को वो पता होना चाहिए कि उसमें स्टेट चेंजेस हो रहे हैं, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वी विल गो फॉर कंट्रोल्ड फॉर्म. क्योंकि कंट्रोल्ड फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे यूजिंग द हुक कॉल्ड एज यूज स्टेट, एंड एनी चेंजेस इन द इनपुट एलिमेंट्स, ओके, will definitely okay will definitely notify the React, and React is always going to take that new value or updated value. So उस केस में we will go for controlled form. We will go for control form. So controlled uncontrolled में यूज रेफ हम यूज करने वाले, कंट्रोल में तो ऑब्वियसली हम लोग कस्टम यूज स्टेट हुक यूज करेंगे. ओके, सो टू क्रिएट the state variable for each input element, for each input element the use state hook is used. Okay, so now what we are going to do is कि हमें जो ये फॉर्म क्रिएट करना है एड एम्प्लॉय का, जिसमें हम आईडी, नेम, सैलरी और इमेज पाथ के लिए फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं. तो राइट नाउ दिस फॉर्म वी आर गोइंग टू क्रिएट यूजिंग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट. I'm going to design this by using the uncontrolled component. और फिर यूजर जो भी वैल्यूज देगा टेक्स्ट बॉक्सेस में, ओके, आई एम गोइंग टू यूज और रीड दोज वैल्यूज यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल्स. तो यहाँ पे इफ यू सी अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में वी आर गोइंग टू यूज रेफरेंस वेरिएबल्स. मतलब जितने इनपुट एलिमेंट्स होंगे उतने रेफरेंस वेरिएबल्स होंगे. सो इफ देर आर 5 input elements in my form, how many reference variables I have to create? Tell me. 5. 5 रेफरेंस वेरिएबल्स. और वो रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए आई विल यूज रेफ हुक. ओके, so now let us go and create this. Okay, add employee form. Now see, add employee can be done using uncontrolled as well as controlled components. Okay, so what will you choose?
Now obviously if you want to maintain the state of the values that are given by the user, then go for controlled. If you don't want to maintain a state, go for uncontrolled. Okay, so I had already given you a scenario. Scenario मतलब जैसे आप लोग अगर ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, okay, in online calculator you don't want to store the values, you are not interested in maintaining the values. Okay, जो भी कैलकुलेटर वो टेम्पररी आपने लिए वैल्यूज, कैलकुलेशन का रिजल्ट दिखाया एंड दैट्स इट. You are not interested in showing those or maintaining those values, go for uncontrolled. But if you want to maintain those values, okay, maintain मतलब क्या है, component level पे अगर उसको maintain करना चाहते हो तो go for controlled components, right? So now here right now we will see it using the uncontrolled form. So uncontrolled form अभी हम यहाँ पे create करेंगे. So I'll remove this and I'll put an empty fragment, and in this I'm going to create the uncontrolled form. So I'll just write here demo, let's say H2 demo of add employee using uncontrolled form. Okay, now so यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे. आई विल क्रिएट अ फॉर्म. अब फॉर्म क्रिएट करना है तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से ही हमें क्रिएट करना है यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप. तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में फॉर्म टैग है. So here you can see there is a form tag. So form tag I will use, and inside this form tag I will create a form group. Inside one form group I will create a form label. जैसे आप लोग HTML फॉर्म क्रिएट करते हो ना, वैसे फॉर्म लेबल हमें क्रिएट करना है. फॉर्म लेबल, ओके एक मिनट, फॉर्म डॉट, यहाँ पे भी फॉर्म डॉट ग्रुप है ये. form dot label, and in this form dot label I am going to have the let's say label as, okay, यहाँ पे सबसे पहला अभी एम्प्लॉय को हमने क्या क्या डेटा दिया है, एक मिनट, लेट अस चेक. दिस आईडी, नेम, सैलरी एंड इमेज पाथ. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम यूजर को पूछेंगे आईडी क्या है. देन आई एम गोइंग टू हैव फॉर्म डॉट इनपुट एलिमेंट. अगर क्रिएट करना है इनपुट एलिमेंट तो आई एम गोइंग टू हैव योर फॉर्म डॉट कंट्रोल. फॉर्म डॉट कंट्रोल, फॉर्म डॉट कंट्रोल मतलब क्या है, इनपुट एलिमेंट. दिस इज गोइंग टू क्रिएट इनपुट एलिमेंट टाइप. अब टाइप क्या है, तो टाइप इज नंबर. टाइप इज नंबर. फिर उसके बाद हम इसको प्लेस होल्डर प्रोवाइड करेंगे. प्लेस होल्डर में लिखेंगे हम एम्प्लॉय आईडी. ओके, तो HTML एलिमेंट्स जो है, इनपुट एलिमेंट्स, इनपुट उसके जगह पे फॉर्म कंट्रोल होगा क्योंकि हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं. ओके, सो राइट नाउ आई हैव क्रिएटेड ओनली फॉर आईडी. नाउ आई विल क्रिएट फॉर नेम. तो यहाँ पे होगा नेम, एम्प्लॉय नेम. टाइप विल बी, टाइप विल बी व्हाट, टेक्स्ट. प्लेस होल्डर में होगा एम्प्लॉय नेम. देन आई विल क्रिएट वन मोर फॉर्म ग्रुप फॉर आईडी, नेम, सैलरी. यहाँ पे टाइप नंबर ही देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, प्लेस होल्डर में सैलरी. देन आई विल क्रिएट इट फॉर इमेज पाथ. ओके, इमेज यूआरएल. यहाँ पे टाइप में होगा टेक्स्ट एंड एम्प्लॉय इमेज यूआरएल. ओके, नाउ एंड देन लास्ट में यहाँ पे एक रिएक्ट का बटन हम क्रिएट करेंगे, दैट इज ऐड एम्प्लॉय. ओके, नाउ राइट नाउ हमने ये सिर्फ फॉर्म क्रिएट किया है. इट इज नीदर कंट्रोल्ड नॉट नॉर अनकंट्रोल्ड. ना ही ये अभी फिलहाल अनकंट्रोल्ड है ना कंट्रोल्ड है. हमने सिर्फ एक फॉर्म क्रिएट किया है. लेट अस चेक दैट वेदर आई एम एबल टू सी दैट फॉर्म और नॉट.
Okay, wait. Const element is form dot group. Form dot. Okay, let me just refresh this. Yeah. So can you see we are able to see the form? Yes. ID, this is the label. ID, name, salary, and image URL. This is the label. And then जो text boxes हमें दिख रहे हैं, those are form controls. Okay, अब हर एक के बाद हम एक break डालेंगे so that I'll be able to see some space in between. Okay, see here. ID, name, salary, and image URL. And similarly, I will do it for button. Okay, yeah. So now, right now, this form is neither uncontrolled nor controlled. Now, I want to design this or I want to create this as uncontrolled form. अनकंट्रोल्ड फॉर्म मतलब क्या है? दैट रिएक्ट में कोई स्टेट वेरिएबल नहीं होगा, कोई यूज स्टेट नहीं होगा, रादर इट विल बी हैंडल्ड बाय एचटीएमएल डॉम. एचटीएमएल डॉम मतलब क्या है कि अगर मुझे इन इनपुट एलिमेंट्स में जो भी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करने वाला है, आई वांट टू डील विद दोस वैल्यूज, आई वांट टू एक्सेस दोस वैल्यूज, देन वी आर गोइंग टू यूज द रेफरेंस वेरिएबल्स. यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स आई एम गोइंग टू do that. And now for creating that reference variable, what I'm going to do is I'm going to have a separate reference variable. Let's say id ref. Okay, let's say I'm having id ref as a reference variable. I'm going to associate this reference variable with the input element. Now, any change in this particular input element's value will be reflected into this reference variable. So, is variable ke through I'm able to get the value that is provided by the user in this particular form control. So now let us see that how to create this reference variable. Now for creating the reference variable, we are having one hook called as use ref. So obviously now I am having id ref equal to, let's say I'm going to create one reference variable const id ref equal to use ref. Okay, so here use ref hook. फिर और एक रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत है हमें और वो है नेम रेफ इक्वल टू यूज रेफ. ओके, देन और एक रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत है हमें और वो है सैलरी रेफ इक्वल टू यूज रेफ. ओके, सो आई एम क्रिएटिंग द रेफरेंस वेरिएबल, वन मोर रेफरेंस वेरिएबल. एंड एक मिनट, सैलरी का स्पेलिंग यहाँ पे, हाँ. इमेज यूआरएल और इमेज पाथ जो भी आपको नाम देना है दे दो. इमेज पाथ रेफ इक्वल टू यूज रेफ. सो आई हैव क्रिएटेड दिस रेफरेंस वेरिएबल. अभी हमने सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किए हैं. नाउ वी हैव टू लिंक दिस रेफरेंस वेरिएबल विद द इनपुट एलिमेंट्स. जो हमारा फॉर्म है, अगर हम वो उसे अनकंट्रोल्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो आई हैव टू एसोसिएट दिस रेफरेंस वेरिएबल with this form controls. Now, how do I associate these reference variables with the form controls? Okay, for that, okay, HTML elements have property, one of the property, and that property is called as a ref property. Every HTML element is having this property, ref. Okay, it's a HTML property, it's not a React property. और इस ref वेरिएबल में हम उसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस वेरिएबल का नाम देंगे. तो यहाँ पे होगा id ref. Now we have linked up the reference variables with the HTML elements. Now we have linked up the reference variables with the HTML elements. इससे क्या होगा, अब इस HTML element में यूजर जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो भी चेंजेस करेगा, वो डायरेक्टली वो रेफरेंस वेरिएबल्स में एक्सेस होने वाले हैं. तो यहाँ पे रेफ प्रॉपर्टी इक्वल टू, एंड आई एम गोइंग टू से हियर व्हाट इज दैट, नेम रेफ. नाउ सिमिलरली सैलरी के लिए भी रेफ
और यहाँ पे होगा सैलरी रेफ. Okay. Then similarly, I'm going to have this image URL ref. So ref property, I'm going to have image path ref. Okay. So I have created the reference variables and then I have associated these reference variables with the input elements. Okay. So that these variables, image path, I mean, these variables, reference variables will provide me the value. Now suppose that on this button click, I want these some logic to be executed. Whenever the user will click the button, I want some logic to be executed. So समझो कि I have given button को type as submit. Now we know whenever we give the type as submit, ये जो submit event है, ये button level पे handle होता है या form level पे handle होता है? Tell me. It's your web designing question. Okay, it's not something related to React. Whenever I give a type equal to submit, ये submit event button click पे handle होता है या form submit पे handle होता है? Yes. When the type is submit, is it handled at button click level or a form submit level? फॉर्म सबमिट लेगा. फॉर्म सबमिट मतलब इस बटन पे अगर आप क्लिक करो तो फॉर्म लेवल पे आपका सबमिट होता है. तो ऑब्वियसली हम फॉर्म टैग को यहाँ पे ऑन सबमिट एक इवेंट देंगे. ऑन सबमिट इज एन इवेंट. एंड जब ये इवेंट रेज होगा, ये इवेंट कब रेज होगा? जब बटन पे क्लिक किया जाएगा. व्हेन द बटन टाइप इक्वल टू सबमिट विल बी क्लिक, दिस इवेंट विल बी रेज्ड. And when this event is raised, I want one function to be executed. And what is that function? I want one callback function. Const on add employee. Okay, on add employee click. Okay, this is a function. This is going to be a logic that I want to execute. Okay, here I am going to define a logic. I'm going to define a logic that should execute whenever a button is clicked. This is a handler of on submit event. Okay, and this logic should get executed. So whenever on submit will happen, here this function should be called. So I have given that on submit this function should get called, that is on add employee click. अब इसमें हमें लॉजिक कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल्स है उसमें से वैल्यू लेना और वो वैल्यू फिलहाल हम अलर्ट पे डिस्प्ले करेंगे. लेट अस डिस्प्ले इट ऑन अ अलर्ट बॉक्स. ओके, सो अलर्ट बॉक्स पे डिस्प्ले करना है तो आई एम गोइंग टू से हियर, लेट्स से एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट मैसेज करके. ओके, एंड कॉन्स्ट मैसेज की भी जरूरत नहीं है. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू से अलर्ट एंड अलर्ट को हम यहाँ पे आईडी रेफ. अब आईडी रेफ ये रेफरेंस वेरिएबल है, उसमें से हमें वैल्यू चाहिए. यूजर ने जो भी वैल्यू दिया है उस फॉर्म इनपुट एलिमेंट में, तो उसको एक्सेस करने के लिए आई एम गोइंग टू से आईडी रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू. concatenate with space, concatenate with name ref dot current dot value, concatenate with space, concatenate with salary ref dot current dot value plus space plus इमेज पाथ को छोड़ दो, इमेज पाथ हम डिस्प्ले नहीं करेंगे. ओके, सो अलर्ट में ये सब हम डिस्प्ले कर रहे हैं whenever the user is going to click. Now let us try to run this. Okay, so I will go in the browser. I give some ID. लेट्स से मैंने आईडी कोई रैंडम आईडी दिया है 5. एम्प्लॉय नेम दिया है, लेट्स से आई हैव गिवन द नेम एज जॉन. सैलरी आई हैव गिवन एज 78,000 एंड सम इमेज यूआरएल. तो इमेज यूआरएल जो हमने ऑलरेडी डीबी डॉट जेसन में यूज किया है उसी को हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम न्यू इमेज. ओके, नो नीड ऑफ गिविंग दिस
and I say add employee. Can you see the alert? Can you see the alert? We are getting the correct data. 5 John 78,000. Yes, इमेज Yes, पाथ ma'am. हमने डिस्प्ले नहीं किया है. ओके, इसका मतलब है कि यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स आई एम सक्सेसफुली एबल टू गेट द वैल्यूज दैट आर गिवन बाय द यूजर इन द टेक्स्ट बॉक्सेस. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हमें ये अलर्ट पे शो करना है या हमें डेटाबेस में डालना है? डेटाबेस में डालना है। यस, इन द db.json. तो ऑब्वियसली हम जो जो हमने कस्टम हुक बना के रखा है यूज पोस्ट, उसको कॉल करेंगे. ओके, सो लेट अस गो बैक in the add employee, and instead of alert over here, whatever values are given by the user, whatever values are given by the user, I have to call this use post. अब देखो यूज पोस्ट में ये जो पोस्ट डेटा है ये मुझे कॉल करना है एक्चुअली. ये जो यूज पोस्ट, आई मीन यूज पोस्ट के अंदर जो पोस्ट डेटा हमने जो फंक्शन बना के रखा है, ये हमें कॉल करना है. तो सबसे पहले आई हैव टू रिट्राइव दिस. यूज पोस्ट में से इसको रिट्राइव करेंगे कैसे? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से. सो आई एम गोइंग टू से हियर const post data equal to use post. ओके, तो हमने ये यूज पोस्ट कॉल किया.